सबसे पहले हमारी जी काउंटिंग रेशियोज का टॉपिक है ओ लेवल्स का, और सबसे पहले हमारी जो रेशियो होती है वो आपकी है जी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है जी ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या बताती है? That how much your gross profit is in comparison to sales divided by sales into 100. How the higher gross profit ratio is favorable, the lower the ratio is unfavorable. So how the ratio is going to increase? If there is increase in sales, right, with a less increase in cost of sales. Sales are increasing, but increasing more than the increase in cost of sales. Your gross profit ratio will increase, or the cost of sales are decreasing, but less than the decrease in cost of sales. Again, the ratio will automatically increase. Sales are decreasing, but less than the decrease in cost of sales. यानी cost of sales are more decreasing. तो gross profit ratio आपकी क्या करेगी? बढ़ जाएगी, increase कर जाएगी gross profit ratio. ये चीजें आपकी मैटर करती हैं. Gross profit divided by sales into 100 हमारा फॉर्मूला है. We can increase our gross profit by reducing the cost of sales, cheaper raw material. ठीक है ना, cheaper raw material purchase करेंगे तो reduce करेंगे, cost of sales बढ़ जाएगी आपकी. Advertisement से sales increase कर जाती है. Selling price बढ़ाएंगे तभी आपकी sales increase करेगी. These are all things which will result in increase in gross profit ratio. So gross profit ratio is an important factor to decide about the performance of the business also. Higher gross profit ratio is always feasible. Next आती है आपकी net profit ratio. The formula for net profit ratio is net profit divided by sales multiplied by 100. हम ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं मैंने बताया नहीं आपको. ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स. कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकालते हैं? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. तो वो भी लिख लेते हैं. ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. ठीक है जी. अब नेट प्रॉफिट रेशियो में नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा आपका, इसको देख लेते हैं. नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस एक्सपेंसेस. हम तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं, एक ही बात. नेट प्रॉफिट रेशियो जो है वो आ जाएगी. अब higher the net profit ratio is favorable and lower the net profit ratio is unfavorable. ठीक है जी. और net profit ratio basically tells the efficiency of the business. It tells you how much you are able to control your expenses. It tells the efficiency of the business and it tells how much you are able to control your expenses. टाइप लग रहा है. How much you are able to control your expenses, your ability to control your expenses, ये लिख सकती हो. Or how much you are able to control your expenses. Or higher the ratio is favorable or lower the ratio is obviously unfavorable. इसके बाद आपकी आती है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो.
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का फॉर्मूला हमारा होता है जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट भी कह सकते हैं इसको आप, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100. ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100. ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? जिस तरह नेट प्रॉफिट निकालते हैं, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही आपका नेट प्रॉफिट. कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है जी कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, यानी जितना आपने सरमाया बिजनेस में लगाया है, आइदर बाय योर ओन कंट्रीब्यूशन और बाय सम अदर कंट्रीब्यूशन. इसके अलावा भी फॉर्मूला होता है इसका, और आप लिख सकते हैं इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी भी होता है कंपनी के हिसाब से. This ratio basically tells that how much return you are getting on your investment. Whatever amount you have invested in the business, how much return you are getting on your investment. Because your investment is basically a combination of two things. Either you put the money with your own investment, that is called capital, or you have to take some loan from outside people, they are called liabilities, and that is the contribution you have made into the business to run the business. So that is known as capital employed, and how much return you are getting on the investment you have made in the business, that is basically told to us or informed through this ratio, which is known as return on capital employed ratio. Higher the percentage is obviously positive and lower the percentage is negative. ये जो कहलाती हैं, जब मैंने पीछे लिखी हैं, ये सब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं. अब हम बात करेंगे जो ज्यादातर लिक्विडिटी रेशियोज कहलाते हैं. लिक्विडिटी रेशियोज, इनमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट रेशियो है आपकी, वो है करंट रेशियो. करंट रेशियो का आपका फॉर्मूला होता है जी करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. Assets divided by current liabilities. So best ratio is basically 2:1. The best ratio is 2:1. 2:1 अगर है तो वो सबसे बेहतरीन रेशियो हम कंसिडर करते हैं. Best ratio is 2:1 and it is considered to be the best ratio. It tells you the ability of the business to pay back your current obligations. It tells that how much current liabilities you can pay from your current assets. And this ratio is good when it is 2:1, means that your current assets are double than your current liabilities. Then it will be considered as a good ratio. So 2:1 is basically considered to be a good ratio. And if it is less than that, we will consider that the business ability to pay back its current position is not good, current obligation is not good, means the liquidity of the business is poor, or liquidity of the business is worsen. That your current assets are double than your current liabilities. 2:1 का मतलब यही है, करंट एसेट्स जो है वो डबल देन योर करंट लायबिलिटीज. उसके बाद आपकी आती है जी लिक्विड रेशियो. लिक्विड रेशियो जी आपकी बताती है, उसका फॉर्मूला होता है जी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. Current liabilities. Current asset minus closing inventory divided by current liabilities. That will be your liquid ratio.
Current assets minus closing inventory. Divided by current liabilities. Overall divided by current liabilities. This ratio, good ratio, will be considered as 1:1. It basically tells the ability of the business to pay back its current obligation quickly. How quickly you are able to pay back your current obligation, because it includes only those assets which can be converted into cash very quickly, like cash in hand, cash at bank, and trade receivables. Closing inventory is not a part of liquidity ratios because it takes most time to convert into cash, because the closing inventory is the inventory which is left at the end of the year, and then it is going to be converted into cash in the next year. It can be sold in the next year. So it will take more time to convert into cash. So closing inventory is not a part of liquid assets. Current assets minus closing inventory divided by current liabilities. And this ratio should be equal to 1:1, which is considered to be as a good ratio, because it tells that your current obligations, your current liabilities are equal to current assets. Your current assets are equal to current liabilities, I mean. It also tells the liquidity of the business. It is even better measure. It is better measure to measure the liquidity because it does not include inventory in it. Because inventory takes more time to convert into cash. Inventory turnover ratio. इसका फॉर्मूला होता है जी हमारा cost of sales divided by average inventory. ठीक है जी, इसका जो आंसर निकलता है वो आपका निकलता है टाइम्स में. Higher the ratio is favorable, lower the ratio is unfavorable. It tells that how many times you are able to convert your inventory into sales within a year. Yani your inventory is moving out because of sale. How many times you are able to convert your inventory into sales? How many times you are able to convert your inventory into sales? Higher ratio is favorable and lower ratio is unfavorable. If you are holding too much inventory or your inventory turnover ratio is lower, it means that money is tied up in the stock. Your money is tied up in the stock, and that will create what it can. Your inventory can be damaged, can become obsolete, can be stolen, can become outdated. एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है हमारा, कॉस्ट ऑफ सेल्स हम पहले निकाल चुके हैं. एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है जी is equal to opening inventory plus closing inventory divided by 2. Divided by 2 आप करेंगे तो आपका एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला आ जाएगा. Average inventory, opening inventory plus closing inventory divided by 2. So it is basically नेक्स्ट रेशियो आपकी होती है जी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो. इसका फॉर्मूला होता है जी ट्रेड रिसीवेबल ओवर सेल्स. You will get the answer. Trade receivable over sales. Return on capital employed ratio. Capital employed basically होता है जितना समाया आपने लगाया कारोबार में, उसमें एक तो खुद लगाया आपने कैपिटल या फिर नॉन करंट लायबिलिटी किसी और से लेके लगाया. That will be your capital employed. Equity plus non current liability भी कह सकते हैं. कंपनी में इसको इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी कहते हैं.
इक्विटी का फार्मूला हमारा होता है, लेकिन वो हम उसको बाद में देखेंगे। उसका फार्मूला इक्विटी का होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स, उसको हम कहते हैं इक्विटी कहते हैं। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स और प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स आप करते हैं तो इक्विटी आपकी आ जाती है। कंपनी के साथ है ना, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है ये कम ही आता है नॉर्मली। उसके बाद हम निकालते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर इन नंबर ऑफ डेज रेशियो। या कलेक्शन पीरियड रेशियो भी कहते हैं इसको, नंबर ऑफ डेज। जी जी आसान है, कलेक्शन पीरियड रेशियो भी कहते हैं इसको। फॉर्मूला हमारा होगा जी ट्रेड रिसीवेबल ओवर सेल्स इनटू नंबर ऑफ डेज इन ईयर, जो कि हम नॉर्मली कितने लेते हैं 365। इसका फॉर्मूला होगा ट्रेड रिसीवेबल्स ओवर सेल्स into 365. This ratio basically tells that in how many days you will be able to collect your trade receivables, depending upon the credit period given to the customers. In how long you will be able to collect your money from trade receivables, how long it will take to collect your amount from trade receivables. That is basically known as trade receivable turnover ratio. And lower the ratio is favorable. जितना दिन कम होंगे, जितना जल्दी पैसे मिलेंगे उतना फायदा है। Lower the ratio is favorable and higher the ratio is unfavorable. उसके बाद आपकी आती है जी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है ट्रेड पेबल ओवर क्रेडिट परचेजेस। इसका भी क्रेडिट परचेजेस ही है, उसका भी क्रेडिट सेल ही है। मैं लिख देता हूँ सही करके, ठीक है जी। ट्रेड पेबल ओवर क्रेडिट परचेजेस, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू पे बैक योर करंट लायबिलिटीज, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू पे बैक योर ट्रेड पेबल्स। ठीक है जी, आप ट्रेड पेबल्स को कितनी देर में पैसे वापस कर देते हैं। हाउ ऑफन यू आर मेकिंग पेमेंट टू योर ट्रेड पेबल्स। तो ये मैं इसको थोड़ा सा चेंज इसलिए कर रहा हूँ कि ये बेसिकली सेल्स सारी नहीं होती हैं, क्रेडिट सेल्स होती है। दोनों में क्रेडिट सेल्स, इसमें क्रेडिट परचेजेस। इसका ट्रेड परचेजेस, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट इसमें होती है ट्रेड पेबल टर्नओवर इन नंबर ऑफ डेज रेशियो। फॉर्मूला होता है जी ओवर क्रेडिट परचेजेस multiplied by number of days in a year, which is 365 हम नॉर्मली लेते हैं। ये आपकी आई थी ट्रेड पेबल इन नंबर ऑफ डेज रेशियो। इन हाउ मेनी डेज यू आर एबल टू पे बैक योर ट्रेड पेबल्स, how long it will take to pay back your trade payables. So higher the ratio is favorable and lower the ratio is unfavorable, right? Because the more the trade payables are going to be delayed, the better it is for you, because you will retain cash in the business. The cash will be retained in the business. After all, the liability है, तो बहुत ज्यादा देर करना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि otherwise the suppliers, they will become angry with us and they will stop supplying the goods to you. Generally ये होता है, how long it will take us to pay them, yes, the trade payables. ये ratios हैं सारी जो हमने डिस्कस की हैं। सबकी तो नहीं, जी बिल्कुल, ये बात ठीक है आपकी। ठीक है जी, अब चलते हैं हम आगे। इसके अलावा हमारी एक रेशियो होती है नॉन करंट एसेट टर्नओवर रेशियो।
आपके कोर्स में इतनी आती नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको यूज कर लेते हैं। नॉन करंट एसेट टर्नओवर, होता है जी सेल्स ओवर नॉन करंट एसेट्स। ए लेवल्स में तो है ही, ओ लेवल्स में इतना इसका काम नहीं है। इसका आंसर भी टाइम्स में आता है। ये जो मैंने निकाली है इनका आंसर जो है वो सारी बात है डेज में आएगा, क्योंकि डेज में है ना ये, इनका आंसर जो है वो डेज में आता है। ये बताती है कि कितने नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट हाउ मेनी नॉन करंट एसेट्स, हाउ मच अमाउंट ऑफ नॉन करंट एसेट्स आर एबल टू जनरेट, how many times sales have been generated by non current assets. By using non current assets, how many times we are able to generate sales. ठीक है जी, चलें इसका कोई क्वेश्चन हम देखते हैं। ये सिग्निफिकेंस वगैरह सारी मैंने लिखी हुई, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। वही जो मैंने समझाया सब कुछ वही इसमें लिखा हुआ है, ट्रेड रिसीवर और ट्रेड पेबल वगैरह का भी। देखें, a shorter collection period implies prompt payment by trade receiver, reduces the chance of bad debts. A longer credit collection period implies too liberal and inefficient credit collection. आपकी credit policy अच्छी नहीं है. It is difficult to provide a standard collection period of trade receiver. It depends upon the nature of industry, seasonal characteristics of the business, and credit policies of the firm. Trade payables क्या बताती है? The speed with which the payment of credit purchases made to the trade payables. And lower credit period enjoyed ratio signifies that the trade payables are being paid promptly, then enhancing the credit worthiness of the company. However, a very favorable ratio to this effect also shows that the business is not taking full advantage of credit facilities which can be allowed by the trade payables. Facility जितना वो दे रहे हैं वो कर नहीं रहा, और अगर जल्दी पेमेंट कर रहे हैं तो वो प्रॉम्प्ट पेमेंट हम कर रहे हैं। क्रेडिट वर्थिनेस बिजनेस की बढ़ रही है, सप्लायर्स हमें पैसे चीजें सेल करने के लिए रेडी होंगे कि ठीक है जी हम करते हैं। ठीक होगी जी बात। नहीं पता है कि करंट रेशियो है वो लिक्विडिटी रेशियोस का, उससे पहले वाली कौन सी रेशियोस है? करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, उसके बाद पहले ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे कहते हैं ये वाली जो है लिक्विडिटी रेशियोस है जो आ गई, हाँ, उससे पहले वाली कौन सी? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस कहलाती हैं। प्रॉफिटेबिलिटी और प्रॉफिट बताती है ना आपको, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताती हैं, और दूसरी जो लिक्विडिटी के बारे में बताती हैं। हाँ जी, एक्टिविटी भी होती है इसके अंदर। वैसे तो परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस ही मेजर करना है ना आपने, बेसिक पर्पस से परफॉर्मेंस मेजर करना ही है। तो देखिए ये हम क्वेश्चन करने लगे, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है वो मैंने निकाला है। कहते जी पॉला अर्न सप्लाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन relating to her financial year ended 30th April 2010. Revenue and sales दी है 2,50,000, inventory दी हुई opening inventory 10,000, inventory दी हुई closing 25,000, और gross profit to sales ratio दी हुई 40%, और profit for the year to sales ratio दी हुई 8%. Calculate the following: cost of sales, purchases, expenses और rate of inventory turnover ratio कह रहे हैं निकालना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं हम। अच्छा,
सबसे पहले कहता है जी कि ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल रेशियो दी हुई 40%, यानी कि जीपी हमें दिया हुआ है 40%, जीपी आपको दिया हुआ है 40%, और जीपी जो है ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल रेशियो 40% है, और रेवेन्यू हमें दिया हुआ है, ऐसे ही है ना। तो रेवेन्यू कितना है जी आपका 2,50,000 का, इसका 40% जो है वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, क्योंकि उसने साफ साफ बताया हुआ है ना, इसके अंदर तो मार्का मार्जिन का ताल्लुक ही नहीं है, इसमें तो उसने बताया ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो, यानी सेल्स का ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 40% है, तो सेल्स का मैंने 40% ले लिया, तो मेरे पास जीपी आ जाएगा जी। जी कितना आ जाता है जी, 40,000 का 40%, 1,00,000, ठीक है। अब हम कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लेते हैं इसमें से। वो कैसे निकालेंगे जी, सेल्स में से माइनस कर देंगे जीपी, सेल्स कितनी है 2,00,000 माइनस 1,00,000, ये आ जाएगा जी 1,50,000, अब क्या आ जाएगी, यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी आ गई 1,50,000, जीपी आपका 1,00,000 था, सेल्स आपकी आ जाएगी 2,50,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स आपने निकाल ली है, अब आप इजीली क्या निकाल सकते हैं, रॉ मटेरियल परचेजेस। वो कैसे सर, वो इस तरह के, हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स बराबर होती है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है जी। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है जी हमारी, 1,50,000, 1,50,000 इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, वो दी हुई ऊपर ओपनिंग इन्वेंट्री 10,000 प्लस परचेजेस नहीं मालूम माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको दी हुई है जी कितनी, 25,000, ठीक है जी। इसको हम सॉल्व कर लेंगे जी, परचेजेस आपकी आ जाएंगे जी 1,50,000 माइनस 10,000 और प्लस 25,000, आपकी परचेज आ जाएगी 1,40,000 और प्लस 25 कितनी हो जाएगी, 1,65,000 एज पर माई ओपिनियन। ठीक है ना, 165. हाँ वही, ये हमने फाइंड कर ली, तो हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स भी फाइंड कर ली, रॉ मटेरियल परचेज भी फाइंड कर ली, अब हमने फाइंड करना है जी एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस फाइंड करने का तरीका देखें हम कैसे एक्सपेंसेस फाइंड करेंगे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए आपको पता है कि जो नेट प्रॉफिट है ना, वो बराबर किसकी होता है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस बराबर किसके होंगे, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट, सिंपल। तो हमें 8% दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट रेशियो में दी हुई 8%, मतलब है कि नेट प्रॉफिट रेशियो जो है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है 8%, यानी कि सेल्स का 8% नेट प्रॉफिट है, यानी कि 2,50,000 हमारी सेल्स है, उसका 8% आपका नेट प्रॉफिट है, तो कितना आ जाता है देखें जी, जीपी आपका है जी 1,00,000 माइनस नेट प्रॉफिट हम माइनस कर देंगे, ये कितना आता है 2,25,000 का, 2,50,000 का 8%, मेरे ख्याल ये आता है 20,000। 1,00,000 में से आप 20,000 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 80,000।
20,000 जी और उसमें से 1 लाख से जीपी में से नेट प्रॉफिट माइनस कर देंगे ना, एक्सपेंसेस आपके आ जाएंगे 80,000 के, ठीक है ना। तो नेट प्रॉफिट रेशियो में दी हुई थी, सेल्स का 8% निकाल लिया, नेट प्रॉफिट रेशियो आ गई। और नेट प्रॉफिट होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस के, तो एक्सपेंसेस होंगे ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट के, तो आ जाएंगे 80,000। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो हम देख लेते हैं। हम किससे निकालेंगे जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। कॉस्ट ऑफ सेल्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, पहले हमें पता है कितनी, 1,50,000। एवरेज इन्वेंट्री हमारी क्या होगी, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। हमें पता है ओपनिंग इन्वेंट्री 10,000 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 25,000 है, डिवाइड बाय 2 करेंगे ऐड करके तो ये 12,500 आ जाएगा आपका। इसका आंसर आपने टाइम्स में लिखना, करें इसको, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। $50,000 1,50,000 डिवाइडेड बाय 12,500, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 12,500। ट्वेल्व टाइम्स, ठीक है, टाइम्स में आएगा ना 12 टाइम्स, यानी कि ये बता रहा है कि आप यू आर एबल टू कन्वर्ट योर इन्वेंटरी इनटू सेल्स 12 टाइम्स इन अ ईयर। So how quickly you are able to sell your stock, how quickly your stock is moving out of the business, that basically tells you the inventory turnover ratio, tells you the same. Higher the ratio is favorable and lower the ratio is unfavorable, or adverse भी कह सकते हैं आप इसको। C part will be the print of expenses. Expenses, ये मैंने आपको क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करवाया है, जो कि था इसका क्वेश्चन 1, हमने इसको कंप्लीट किया, देखिए अभी। हाँ ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी हमारा। ये देखिए जी, सिंपल है, आपने करंट रेशियो फाइंड करनी है, इसको जरा हम हटा देते हैं।